नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अंकिता सेठी और ये है एक मॉनसून स्पेशल योगा वीडियो। एंड नो, इट इज़ नॉट अ कंप्लीट वर्कआउट वीडियो। ये हम बात करेंगे आज इस वीडियो में लाइफस्टाइल की, क्या योगिक प्रैक्टिसेस हैं, खान पान की, व्हाट फूड्स टू ईट, व्हाट फूड्स टू अवॉइड ड्यूरिंग मॉनसून। एंड ऑल्सो अगर आप कोई भी मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं इन अ डे या बाहर नहीं जा पा रहे हैं, सो ये 5 आसनास तो आप ज़रूर करिएगा एंड दिस विल रियली हेल्प कीपिंग योर गट हेल्थ गुड, कीपिंग योर digestion very healthy, increase the blood circulation in your body and keep laziness and sluggishness at bay. Okay, सो इंडिया में ऑफिशियली इट्स मॉनसून सीजन। बहुत जगह, बहुत सारे सिटीज़ और स्टेट्स में ऑलरेडी बारिश हो रही है। इट इज़ माई फेवरेट सीजन, बट विद रेन कम्स अ लॉट ऑफ डिजीजेस। हम देखते हैं दैट इस वेदर में कोल्ड एंड फ्लू, कोल्ड एंड कफ घर घर हो रहा है एंड इट इज़ वेरी कॉमन। इन्फेक्शंस एंड एलर्जीज आर ऑन द राइज। सारे बैक्टीरियाज, कीड़े मकोड़े सर्फेस पे आ जाते हैं एंड पनपते हैं। सो येस, आई वाज सेइंग दैट रेनी सीजन जितना ही खूबसूरत होता है उतना ही हमें डिजीजेस की तरफ लेके जाता है। तो ये वीडियो है कि हम क्या कर सकते हैं इस बारिश को बेटर एंजॉय करने के लिए, ताकि हम स्वस्थ रहें एंड इस मौसम का पूरी तरीके से लुफ्त उठा सकें। Okay, so we'll start with a set of asanas, 5 asanas, very simple, easy doing. हम मैट पे आएंगे and we'll get going with it. So let's see the 5 asanas first. Okay. So first one is sitting in Vajrasana. So Vajrasana में बैठने के लिए we'll lay our feet up, okay, and place our hips on the heels like this. Do this after heavy meals, especially at night when you have had your dinner. उसके बाद डिनर के बाद ये आसना ज़रूर से करना है. It will help improve a lot with your digestion. Okay, so just sit like this, spine tall, hands laid on the knees like this and breathe. यहाँ पे हम 5 breaths लेंगे. Nostril से will inhale and nostril से will exhale out. Next up, second asana is Ushtrasana, also known as camel pose. Ab, I will show 2 variations of it. One will be the full variation, ठीक है, and the second one will be modified. So जिनके घुटने में पेन है, जिनको जो इतना फ्लेक्सिबली बेंड नहीं कर पा रहे हैं अपना बैक, वो सेकेंड वर्जन का वेट करें. सो पहले हम शुरू करते हैं विद द पूर्ण उष्ट्रासना. विल कम अप ऑन आवर हील्स. विल टेक आवर हैंड्स, फुल रोटेशन करते हुए एक के बाद एक हम अपने हाथ पीछे लेके जाएंगे. विल जेंटली लेट आवर पेल्विस फॉल बैक एंड लेट आवर throat fall back and head fall back like this and breathe. Gently coming up. So this was the पूर्ण उष्ट्रासना. फॉर मॉडिफाइड वर्जन आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा गैप बढ़ा दो पैरों के बीच में, ठीक है. टेक योर हैंड्स बैक एंड प्लेस देम ऑन द मैट लाइक दिस, वन बाय वन, एंड जस्ट लुक अप एंड ब्रीथ हियर. You can also place your hands like this. This helps with blood circulation and flexibility.
ये स्लगिशनेस को दूर करेगा आपकी बॉडी से एंड आपको काफ़ी फिट और हेल्दी रखेगा. Okay, come back to normal position. The next one is Trikonasana. Okay, इसके लिए we'll stand up with legs wide apart. Now we'll do it first on the left side. हम अपनी upper body weight को shift करेंगे towards left, hands extended, and we'll go down gently and reach our feet. ठीक है? Right hand goes up and we look up. 1, 2, 3, 4, and 5. We'll gently come on to the center position. We'll repeat the same on the right hand side. 5, 4, 3, 2, and 1. So, जैसे आप देख रहे हैं मैंने अपनी बॉडी से ट्राइंगल पोजीशन बनाया ताकि पूरी बॉडी स्ट्रेच हो सके, एक्सटेंड हो सके एंड ब्लड सर्कुलेशन फ्लो कर सके इन माय बॉडी लाइक दिस. ठीक है? सो विल अगेन फ्रॉम हियर विल सिट इन मलासना लाइक दिस. ठीक है? अपनी फीट पे ही हम मलासना में बैठेंगे. Great position for your gut health, for aiding with your digestion, for relieving tension stuck in the hips and mobility. Sitting in Malasana. This is the fourth asana. Now we'll come to the last and fifth one, which is Balasana. We'll sit on our knees like this. We'll inhale और exhale करते हुए we'll fold forward. I'll touch my forehead to the mat and hands I'll lay them besides my body. Gently rise up. Good. So Balasana will help you calm down your mind, relieve you from any stress if there is any stress, and ground your whole body with the earth. So we saw कि 5 आसनास कौन से हैं जो हमें मॉनसून सीजन में करना चाहिए. नेक्स्ट अप हम देखेंगे कि वो कौन से 3 प्राणायामा हैं जो हमें हेल्प करेगा इस सीजन में टू ब्रीथ बेटर. ओके, सो देयर आर 3 प्राणायामास दैट वी शुड डू. फर्स्ट वन इज अनुलोम विलोम जो कि हम अभी साथ में करेंगे, एंड सेकेंड एंड थर्ड वन आर भ्रामरी एंड भस्त्रिका प्राणायामा. सो आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दिस. You can check out the link somewhere here. So we'll start with Anulom Vilom first. हम विष्णु मुद्रा बनाएंगे अपने हाथों से like this. Okay. We'll keep the thumb, place it on the right nostril and close the left nostril with the ring finger like this. So we'll start inhaling with the left one and exhale through the right. Then we'll inhale through the right and exhale through the left. So one round completes when we complete this inhale and exhale through the left. Left पे ही शुरू करेंगे and left पे ही end करेंगे. Okay, we'll do 2 rounds of this today in this video. So begin with me. Exhale through the inhale through the right. Exhale through the left. Second round, inhale through the left. Exhale through the right. Inhale through the right. Exhale through the left.
तो आप अनुलोम विलोम या भ्रामरी और भस्त्रिका के 5 to 10 राउंड्स कर सकते हैं रोज, प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन कि हमें इस वेदर में क्या खाना चाहिए एंड क्या नहीं खाना चाहिए। वन, वी शुड हैव वार्म फूड्स। ठीक है, वार्म होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, इजीली डाइजेस्टेबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल खिचड़ी, उपमा और इवन सूप इज गुड। सेकेंड वन, हमें क्या क्या स्पाइसेस लेने चाहिए। सो स्पाइसेस फॉर एडिंग आर कीपिंग अप आर fighting agents so that they can fight through the infections and bacteria around us in a good way. तो उसके लिए we should include turmeric, that is haldi, ginger and black pepper in our daily diet. Third up, we should have herbal teas. For example, chamomile tea before going to bed, before sleeping is really good. Apart from that, ginger tea and tulsi tea is also very helpful to keep the cold and flu away. Next up, we should have soaked nuts, for example, almonds, walnuts, and dates. And let's come to the part that what should we avoid in this season. सो द फर्स्ट वन इज, हम बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक एंड फिजी ड्रिंक से हमें दूर रहना चाहिए, और एल्स यू कैन इजीली कैच होल्ड ऑफ थ्रोट इन्फेक्शंस एंड गला खराब हो जाएगा बहुत जल्दी। सो द सेकेंड वन इज स्टेल या कोल्ड फूड। ओके, वी शुड अवॉइड दैट। थर्ड वन इज कर्ड, हमें दही अवॉइड करना चाहिए बिकॉज वो खट्टा होता है। एंड द फोर्थ वन इज वी शुड अवॉइड ऑयली फूड इन दिस सीजन। बाहर का खाना यहाँ बहुत तला हुआ हमें अवॉइड करना चाहिए। एंड द फिफ्थ वन इज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, रॉ सैलड्स एंड मेथी इज समथिंग दैट वी शुड अवॉइड इन मॉनसून सीजन, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ओके, सो आई हैव लिस्टेड डाउन सम फ्रूट्स टू ईट एंड नॉट टू ईट विच विल बी ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड यू कैन एडहेयर टू इट। एंड नाउ विल टॉक अबाउट हमें कौन से वेजिटेबल्स खाने चाहिए एंड कौन से नहीं खाने चाहिए। वो भी मैंने लिस्ट डाउन करा है आपके लिए, आपको स्क्रीन पे भी विजिबल हो रहा होगा। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एज वेल। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज प्रैक्टिस। हमें क्या लाइफस्टाइल में और डेली रूटीन में ऐसे प्रैक्टिसेस करने चाहिए टू कीप डिजीजेज एट बे इन द मॉनसून सीजन। सो द first step is in the to do's list. Dry up your wet feet. If your feet is soaked या बाहर बारिश से आए हैं तो जल्द से जल्द अपना फीट ड्राई करें। ठीक है, एंड सोने से पहले डू सम सेल्फ अभ्यांगा, विच मीन्स ऑयल योर base of the foot before sleeping with sesame oil or coconut oil. It will not only aid good sleep, but it will also help maintain the body temperature and fight diseases. So the first one is this. Second one, avoid sleeping in the daytime. दिन में सोने से स्लगिशनेस बढ़ेगी इन मॉनसून सीजन एंड हमारा जो मूड है वो काफ़ी इरिटेट हो सकता है। ठीक है, सो अवॉइड स्लीपिंग ड्यूरिंग द डे, स्लीप ओनली एट नाइट। मेडिटेट एंड practice pranayama at least once in the morning. Then the fourth one is have some kind of movement in the day. या तो मैंने जो 5 योगा आसन्स बताए दैट, और यू कैन चूज टू गो फॉर अ स्मॉल वॉक जब बारिश नहीं होती है, और यू कैन डू सम जेंटल स्ट्रेचेस मॉर्निंग में ही या इवनिंग में ही, वेन एवर यू फील टाइम, बट मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉट नॉट टू डू, अवॉइड हैविंग एक्सेसिव कैफीन इन द फॉर्म ऑफ कॉफी एंड टी। ओके, सो ये था, दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप अगर सब नहीं तो आप कुछ टिप्स इसमें से उठाएंगे एंड अपने रूटीन में लाएंगे टू नॉट ओनली स्टे एट बे from diseases this season, but also to enjoy it to the fullest. So thank you. I hope you like this video. Please let me know in the comments, like, subscribe and share so that other people, your friends and family, could also benefit from it. Namaste, this is Ani and we will meet in the next video. Thank you.
Bye.